हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते तेरे होमिकुस दोबरा उत्तरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पवन सिंह ब्लॉग में। और मैं बना रहा हूँ आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा की तरह हो रही है बर्फबारी। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बाहर का व्यू। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है, हो रही है बर्फबारी, बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो सारी कारें ढकी हुई हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ अपने किचन के अंदर और आज मैं बना रहा हूँ पनीर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। हाउ टू मेक इंडियन चीज, हाउ टू मेक पनीर। सो यू कैन सी इन दिस वीडियो हाउ वी आर मेकिंग पनीर एंड हाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग विद दिस पनीर। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और कृपया जरूर बताइए आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा पवन सिंह कूल का। तो देखिए हम लोग पनीर कैसे बनाते हैं। और ये मेरे जो लोकल सब्सक्राइबर हैं, एस्टोनियन सब्सक्राइबर, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने आज ये वीडियो बनाया। उन्होंने बोला कि आप लोग पनीर कैसे बनाते हैं, कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। तो लोग हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वो लोग ज़रूर देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कृपया ज़रूर बताएगा। वीडियो में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का और आप भी इंतज़ार करेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो का। कल मैं कुछ और कंटेंट पे वीडियो लेके आऊँगा, तो बने रहे आप पवन सिंह ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। So friends, today I will show you how we making paneer, Indian cheese, and we call this one paneer in India, and Indian cheese. So first of all, obviously we need some milk for make a paneer, and this is a milk, Estonian milk. We call this PIM. And you can see how much creamy this one, 4.2% is creamy this milk. And we will make paneer, and many clients loves our paneer. They like our paneer and garlic naan, paneer naan. And I know one client by face, Robert sir, he like our Sai paneer a lot. Yeah, he came here every week, and often he coming here, and sometime delivery, home delivery, and he likes so much. Thank you sir, thanks for loving our food. Yes, another thing also, he love our murg tikka lasagna also, tandoori murg tikka. So now we're gonna make paneer. Please follow me in this video. We have 20-liter milk here, and now I will put in one pan. I will show you one pot. Putting our milk, this is 20-liter milk. Now I will show you. Then नीस निकालो तो we make empty this all milk here in this pan pot. You can see थोड़ा रोकना के बाद empty here. We make paneer always with 20 or 22 liters milk. When we make paneer, we must have to be see this date is must be valid. If expired milk, never make paneer. We make everything with fresh milk. तो दोस्तों, मैं ये वीडियो कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ लोकल क्लाइंट जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे एस्टोनिया के। तो वो लोग, मेरे को एस्टोनिया इतनी आती नहीं, पर उन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाती है तो लोग समझ जाते हैं। मेरे को बोलते थोड़ा इंग्लिश में बनाकर, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 20 लीटर दूध। अब मैं इसको रखूँगा फायर के ऊपर। नाउ आई विल कीप दिस पॉट इन फायर। सो लेट्स फॉलो मी। तो अब मैं दिखाऊंगा पनीर ये हो गया। दिस इज milk. So now I gonna put this one on fire. Okay, let's follow me. Now I put this milk for boiling in fire, and we have to be wait until become hot.
When it's become hot, then we make this milk separate, and then it's gonna be becoming paneer. एक दो लीटर और डाल दो इसमें. If you have, put one more. So दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको हम लोग कैसे पनीर बनाते हैं. तो दोस्तों, अब हो चुका हमारा ये दूध गरम. आप देख सकते हो दूध गरम हो चुका है. और इसको सेपरेट करने के लिए हम डालेंगे इसमें नींबू का रस. ये लिया हमने लाइम और इसको हम इसमें निचोड़ देंगे अच्छे से. आप इसमें विनेगर का भी यूज कर सकते हो, नींबू का भी यूज कर सकते हो. इसमें कम से कम हमारे लग गए 2 नींबू. ये देखिए हमने इसमें निचोड़ दिया अच्छे से लाइम. आप चाहे तो इसमें विनेगर भी यूज कर सकते हो. इसमें करीब करीब हमारे 4 लाइम लग चुके हैं इसको फाड़ने. अब देखते हैं इसका क्या सीन है. आप देख सकते हो ये सेपरेट हो रहा है, ये दूध सेपरेट हो रहा है. हम इसको ऐसे हल्का हल्का वी विल बी शेक दिस मिल्क slowly. You can see how it's going to separate. This is we call Indian cheese. We call this paneer. This is used for paneer naan, paneer garlic naan, paneer lababdar, paneer palak wala, and sahi paneer, kadai paneer. All paneer items we are using this Indian cheese. Now it's become separate. Now we will show you how to make finally this paneer. Okay, how we throw this water, and we will save only these things, white things. Okay, boss. You can see this is become separate. You can see water become separate and milk become separate. Kachchi ka is it's all separate. Water is separate, and now I will show you how to make paneer. Yeah. We are using this cloth for making paneer. Muskin cloth, we call this one muskin cloth, very thin, and we are using this one, and this is strainer. छन्नी है अंदर से, ठीक है ना, छन्नी. और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये. Now we are putting here. You can see very hot. Slowly. You can see milk is separate and water is separate. Let's see. Now we are using like this. See, this is 20 kilogram, 20 liters milk, and you can see how much paneer is there. See, this cloth is very hot, that's why you can use little bit cold water to make it tight. This cloth, make it tight. This cloth, how much you can. Cloth must be not broken. You can see our chef making this paneer, rounding. So tight. Now it's very tight, yeah. Tight. We have to bond from on top this one, and now we will move this one another side. You see, yeah. Like this. Now I will show you what we have to do this one.
Then after we have to put this paneer one separate. इसी को ऊपर डाल दो. On top this bucket, empty bucket. Then after we put one cover, bucket cover. Then after we put one ketchup bucket on top. This 10 kilogram ketchup here, and then it's become tight, and water goes down. Water goes down, and paneer stay on top. Then I will show you how it's become like that. And we will gonna put one more bucket on top. It means 20 kilogram on top with this paneer. Then water moving very fast out, and paneer will be stay only there. All water will go out, and only paneer will stay there. Now you can see how we are making paneer, how long time is taking. तो दोस्तों फाइनली ये हमारा पनीर रेडी हो चुका है और मैं इसको ओपन करूंगा. आप देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हमारा पनीर रेडी. ऐसा बनता है इंडियन पनीर, इंडियन चीज़. और ये आप देख सकते हो इंडियन चीज़ 20 लीटर दूध का हमने ये इंडियन पनीर बनाया है, चीज़ बनाया है. ये ऐसा बनता है. अब हम इसको क्यूब्स की कटिंग करके, तो ऐसे में दिख नहीं रहा होगा, ये है पनीर. इसको ऐसे स्लाइस में काट देते हैं, और स्लाइस के बाद हम इसके क्यूब, इसके हम स्लाइस बना के पहले हम इसको ऐसे स्लाइस काटेंगे सारे पनीर को. ऑल पीस स्लाइस. वीडियो लंबी हो जाएगी, इट विल बी वेरी लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई विल मेक शॉर्ट very fast. Then after we will make all cubes equal pieces. It was stay there in the strainer 6 or 7 hours. Then water go down and only paneer stay there, and then after it's become a bit, you can see, very nice, and you can eat this paneer same like this. This is paneer, it's ready. Wow, very soft, very soft, very nice, very tasty. Please must visit our restaurant. Then we make all cubes like this. Now finally our paneer is ready. So please come and eat. Thank you very much. आज हमने आपको बताया इंडियन पनीर कैसे बनना है, हाउ टू मेक इंडियन चीज़. सो इन दिस चीज़ हैव सो मच कैलोरीज, सो मच प्रोटीन. बहुत प्रोटीन होता है दूध के अंदर, कैलोरीज होती है इसमें. और ये हमने बनाया आज पनीर, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा. हाउ यू लाइक दिस ब्लॉग्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स. देन आई विल मेक न्यू ब्लॉग्स फॉर यू गाइज. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.